morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine there. And even we'll pick up some of the schools today, right? So today what we are going to do is we will practice for like can, can't. ठीक है? Can't क्या होता है? Like cannot को हमने क्या कर दिया? Contract कर दिया. So we will practice for search words, right? Can, can't, must, mustn't. mustn't कैसे बना? must not को हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, 2 वर्ड्स को हमने एक बना दिया एंड इट बिकेम mustn't. mustn't नहीं बोलेगा कोई. क्लियर है? ठीक है. सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोनाउंस इट? mustn't. टी की साउंड वहां पर साइलेंट रहेगी. ओके, सो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, राइट, एंड देन वी विल क्लियर ऑल द क्वेरीज. राइट, चलो. Welcome to the learning activity Do's and Don'ts. This activity covers words and expressions used to tell us what we are allowed to do and what we are not. Do not, can and can't, must and mustn't. Words used to ask, give or refuse permission. Can and can't. Words used to tell us what is necessary to do and what is not. Have to and don't have to. Has to and doesn't have to. Rules are orders or instructions that we need to obey or follow for our safety or for the protection of public property. Let's look at the pictures of some of the places around us and read the rules associated with them. Observe the words that tell us about things we are allowed to do and the words that tell us about things we are not allowed to do. Look at this picture of the National Museum and read the notice board alongside. The notice board gives us information about the days and timings for visiting, the entry fee, and the charges for carrying a camera. It also lists some rules we need to follow when we visit the museum. Observe that the words do not have been used to talk about things that we are not allowed to do inside the museum. For example, do not smoke inside the museum. The words do not indicate an order that is necessary for us to obey. Click the button below to read some more examples of rules with do not. Read the notice board again. What are the things we are allowed to do inside the museum? We use the word can to talk about the things that we are allowed to do. For example, you can take a camera inside the museum. We use the word can't to talk about the things that we are not allowed to do. For example, you can't smoke inside the museum. When used in rules or instructions, the word can means that we have permission to do some things, while can't means that we do not have the permission. We also use the words can and can't to talk about our ability or inability to do certain things. For example, I can speak Hindi and English, but I can't speak German. Click the button below to read some more examples of can and can't in rules. We use the word must to refer to things that are necessary for us to do. For example, you must buy a ticket to enter the museum. We use the word must not or mustn't to refer to things that we should not do. For example, you mustn't litter the museum premises. Must and mustn't are similar to do not because they are used to give instructions or orders that we need to obey. Click the button below to read some more examples of must and mustn't used in rules. A group of school children is here to visit the museum. The guard at the museum explains the rules to them. Let's listen to their conversation and observe the words used for things that the children are allowed to do and the things that they are not. Click the button at the bottom of the screen to read the definitions of the words. Click the button beside the picture to listen to the audio. You must buy tickets to enter the museum. Once you step inside, you can spend as much time as you like here, but you must leave by 5 p.m. You must not touch the objects on display. You can take pictures inside the museum, but you need to pay 20 rupees for taking one camera inside. There are some areas of the museum that have been closed for repair. Do not go there. Also, do not take any eatables inside.
You can eat at the museum cafe if you feel hungry. You can take water inside though. And you mustn't litter the museum premises. Throw empty water bottles in the dustbins. I hope no one has brought their pets along because you can't take animals inside. Let's now focus on the use of can and can't in everyday conversation for asking, giving, or refusing permission. While can is used for asking or giving permission, can't is used for refusing permission. For example, to take permission, you may ask, "Can I go on a trip with my friends?" To give permission, you say, "Yes, you can." To refuse permission, you say, "No, you can't." Click the button below to read more examples of can and can't for asking, giving, and refusing permission. Let's listen to some conversations and observe the use of can and can't to ask for, give, or refuse permission. Click the button at the bottom of the screen to listen to the conversations. Can I borrow your pencil? Yes, you can. Here it is. Can I have some money? No, you can't. I gave you some just yesterday. Can I make a call from your phone? Of course you can. Can I speak with you for a moment? Sure, you can. Can I take leave tomorrow? You can't. There's a lot of work to be done. We have learnt about the use of can, can't, must, and mustn't with rules. These words tell us what things we are allowed or not allowed to do. Another set of words that are used to convey do's and don'ts are have to and don't have to. Look at the picture and read what the students say. Observe the use of have to and don't have to. The words have to indicate that it is necessary to do something, and the words don't have to indicate just the opposite, that it isn't necessary to do something. Have to has the same meaning as must. Both are used for stating rules. We can also use have to talk about something we do regularly. For example, I have to attend board meetings every Monday. Click the button below to read more examples of how these words are used. Here are two sets of conversations. Let's listen to these conversations and observe the use of have to and don't have to. Click the audio buttons to listen to the conversations. Then click the button at the bottom of the screen to find out what each person has to or doesn't have to do. You have a stomach infection, Rani. You have to eat light food for a few days. And you have to take these medicines for a week. Do I have to take antibiotics? No, you don't have to. My daughter Madhu has a slight cold. Does she have to take some medicines too, doctor? No, she doesn't have to take medicines, but she has to eat a lot of vitamin C. Hi Rahul, what are you doing tonight? Would you like to see a movie? Hi, Meena. Sorry I can't go out tonight. I have to get up very early tomorrow for my English class. Luckily, I don't have to submit my English project till next week. What about you? Oh, I don't have to get to college till 10 o'clock tomorrow, so I don't have to get up too early. But I have to take the dog for a walk, so I have to get up by 7 o'clock. Let's sum up what we have learned. In this learning activity, we learned words used to tell us what we are allowed to do and what we are not allowed to do. Do not touch the objects on display in the museum. Can and can't. You can go out of office only during the lunch hour. You can't talk on the phone while driving. Must and mustn't. You must obey the traffic rules. You mustn't smoke in a hospital. Words used to ask, give, or refuse permission. Can and can't. Can I borrow your book? No, you can't borrow my book. Yes, you can borrow my book. Words used to tell us what is necessary to do and what is not necessary. Have to and don't have to. I have to go to the doctor today. I don't have to submit this report till tomorrow.
Congratulations! You have completed the learning activity do's and don'ts. मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस करवाती हूँ. Whatever we have learned. हमने क्या लर्न किया आज? परमिशन लेना. ठीक है, तो परमिशन कई बार मिलती है, ठीक है, और कई बार नहीं मिलती है. तो फॉर परमिशन के लिए इंग्लिश में हम कुछ 2-4 वर्ड्स को यूज करते हैं. ठीक है, लाइक इफ यू आस्क फॉर समबडी, लाइक अपने फ्रेंड से पूछो कैन आई टेक योर पेन. आपने पूछा, तो अब ये उसके ऊपर है, अगर वो अलाउ करेगा या करेगी, तो द पर्सन विल से यस यू कैन टेक द पेन. और अगर वो अलाउ परमिशन नहीं देगी आपको, तो व्हाट शी विल से नो यू कैन नॉट टेक द पेन. ठीक है, ऐसे परमिशन कहीं और भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में. जैसे म्यूजियम में था, अभी आपने वीडियो देखा था ना, उसमें क्या था, कैन वी क्लिक द पिक्चर. तो परमिशन थी यस यू कैन, बट इट विल बी चार्ज 20 रुपीज, है ना, राइट. और कौन सी वर्ड्स का क्या था, मस्ट और मस्ट नॉट. और मस्ट नॉट मैंने पहले भी बताया था आपको. मस्ट नॉट, हाउ विल यू कॉन्ट्रैक्ट बोथ दीज वर्ड्स इनटू मस्टंट. कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, मस्टंट, राइट. तो लाइक जैसे यू मस्ट वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर्स. ठीक है ना, राइट. यू मस्टंट, क्या था उसमें, एक एग्जाम्पल था, यू मस्टंट पुट ज्वेलरी इन स्कूल. ठीक है, चलो अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग. ठीक है, चलो कम ऑन द स्क्रीन अगेन. ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन. यहाँ पर देखो आपको कुछ मटेरियल है, एंड व्हाट प्रैक्टिस इज बीइंग डन हियर इज, किस चीज की प्रैक्टिस हो रही है, कैन एंड कांट की. ठीक है, जस्ट लुक हियर, some instructions are given here, can and can't. Cannot को we have squeezed into can't. Can't नहीं बोलेंगे, can't. ठीक है, can can है, but cant, ठीक है, ऊपर apostrophe comma लगा हुआ है, right, it is can't. Okay, now certain lines are written here. It is conversation between Gauri and Utsav. ठीक है, तो देखो just see. Hey Utsav, can you play the guitar? ठीक है, yes a little. What about you? No, I can't. ठीक है ना, see the usage, can का और can't का. But I can play harmonium. ठीक है, amazing, well. Can you cook? Yes, I can cook macaroni and cheese pasta. Macaroni तुम लोग भी खूब खाते हो, right? Okay. Wow, that's great. Can you speak French? Gauri saying. ठीक है, अगेन देखो कैन का यूज देखो, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो, राइट. नो, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड मराठी. ठीक है, राइट. उससे क्या बोला, नो मैं ये लैंग्वेज तो नहीं बोल सकती हूँ. विच लैंग्वेज, फ्रेंच, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड मराठी. लेकिन मैं इंग्लिश एंड मराठी बोल सकती हूँ, राइट. नाउ गौरी सिंह, ओके व्हाट एल्स कैन यू डू. देखो फिर से कैन का यूजेज आ गया. इसके अलावा और क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स. ठीक है, एल्स मीन्स और क्या. ठीक है, नाउ उत्सव इज आंसरिंग, वेल आई कैन राइट प्रोग्रामिंग कोड्स बट आई कांट डू स्केचिंग. उससे पूछा तुम क्या कर सकते हो इसके अलावा, तो ही आंसर्ड कि आई कैन राइट प्रोग्रामिंग कोड्स. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कोड्स लिखते हैं ना, तो ही सेड कि आई कैन राइट प्रोग्रामिंग कोड्स बट आई कांट डू स्केचिंग. लेकिन मैं स्केचिंग नहीं कर सकता. ठीक है, यस. सो गौरी सेड एक्सीलेंट. नाउ अभी आपने इनका यूजेज देखा, राइट. आई एक्सप्लेन्ड इट फर्दर. ठीक है, नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस लर्निंग अभी आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, राइट.
नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यूजिंग कैन और कांट. बस हमें ये दो ही फिल करना है. ठीक है, आइदर कैन और कांट, इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं करना. ओके, सी द फर्स्ट वन. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सब कुछ सीखा, राइट? हाउ टू यूज कैन एंड कांट, राइट? सो वी वर ऑन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, राइट? यस यू कैन. ठीक है, हियर इज इट. यहाँ पे पूछा था ना, कैन आई बोरो योर पेंसिल? सो आंसर वॉज यस यू कैन. ठीक है, आप ले सकते हो. हियर इट इज. ठीक है, सेकेंड वन इज क्या डैश यू गिव मी सम मनी. अभी देखो क्वेश्चन मार्क है ना, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होगा सो व्हाट विल यू डू, आप यहां पर कैन ही लगाओ क्योंकि यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, राइट? सो कैन यू गिव मी सम मनी. आंसर देखो उसके बाद नो, तो नो के साथ ना कांट ही आएगा. ठीक है, नो आई कांट. आई गेव यू सम येस्टरडे ओनली. हो सकता है यहाँ पर मम्मी से मांग रहे हैं पैसे, तो मम्मी इज रिफ्यूजिंग एंड शी इज सेइंग नो आई कांट, आई गेव यू सम येस्टरडे ओनली. कल ही तो पैसे दिए थे मैंने तुमको कुछ. यस. नाउ फिफ्थ वन, अगेन क्वेश्चन है यहाँ पर, तो गेस कर लो. इट इज कैन ओनली. कैन आई मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन? क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ठीक है, यू के साथ क्या आएगा? अभी कैन आएगा, कांट. अब कैन आता ना, इसका सेकंड पार्ट देखो सेंटेंस का. माई फोन्स बैटरी इज डेड. मेरे फोन की बैटरी डेड है. इट मीन्स यहाँ पे रिफ्यूजल है. तो व्हाट विल कम हियर? यू कांट. ठीक है, यू कांट. माई फोन्स बैटरी इज डेड. यस. सो वी प्रैक्टिस फॉर कैन, कांट, मस्ट, mustn't. ठीक है. Okay children, so today we practice for like taking permission. ठीक है, और permission the other person is going to grant the permission or not. ठीक है, जैसे बहुत सी जगह कहाँ हम स्कूल्स में बहुत सी चीजें परमिट होती हैं, बहुत सी चीजें नहीं होती है, राइट? एंड लाइक वर्ड्स यूज, जैसे म्यूजियम में हमने क्या पूछा था क्वेश्चन, कैन वी क्लिक द पिक्चर्स? ठीक है, समथिंग लाइक कैन आई टच दिस थिंग? सो यू मस्टंट. बहुत सी जगह क्या होता है, यू मस्टंट टच एनी मटेरियल इन द म्यूजियम. ठीक है, तो वी प्रैक्टिस फॉर दीज वर्ड्स. सो प्रैक्टिस एट मोर एट होम. इसके ऊपर यू विल मेक सर्टेन सेंटेंसेस. ठीक है, सो टिल देन मिलते हैं आप. नाउ इट विल बी ऑन मंडे ओनली. टिल देन बाय बाय.